Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I'm sure that you all are fine. Today we will talk about a noun phrase, but before discussing anything about a noun phrase, let's find out what exactly is a phrase. Phrase क्या होता है जी? A phrase is a group of words. एक example देता हूँ यहाँ पे आपको मैं. Let's suppose I write my country. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. I love my country. अब आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. पहले तो देखो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. My country, it is a group of words. I love my country, it is also a group of words. But my country is not a clause, and I love my country is an example of a clause. Why? Because in a clause there is a subject and a finite verb, while in a phrase the subject verb both cannot be present in a phrase. If subject is there, you cannot find a verb. If verb is there, then subject will be missing. If both are present, it means that we are not talking about a phrase, we are dealing with a clause. So a group of words, and that particular group of words is different from a clause. In what sense? देखें, my country. Now my country is the subject. Where is a verb? There is no verb. है ना? But if I talk about I love my country, now I is the subject, love is a finite verb, so I love my country. Now in this group of words we are talking about a clause. So phrase में subject और finite verb दोनों नहीं होते. So in that sense a phrase is different from a clause. Inshallah we will cover clauses also soon. Acha, and phrase cannot stand alone in a sentence. Let me give you an example. If I say a smiling face, now a smiling face, this group of words cannot stand alone in a sentence, right? लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ she has a smiling face. अब आप देखो, she is the subject, has is a finite verb. Now this whole bunch of words, she has a smiling face, makes some sense. But if we just talk about a smiling face cannot stand alone in a sentence. So a smiling face is a phrase. Now what is a phrase? A phrase is a group of words that is different from a clause, and it cannot stand alone in a sentence, and we cannot find subject and verb both in phrase, right? Okay ji, another example, full of water. Now again, full of water cannot stand alone in a sentence. I can say fetch me a glass full of water. Now it makes some sense. So fetch me a glass full of water is an example of an independent clause, while just full of water, if I just talk about full of water, it is not a clause, it is just a phrase, right? Okay ji, now we will talk about a noun phrase. Ji janab, what is a noun phrase? A noun phrase functions as a noun in a sentence, राइट जो नाउन फ्रेज है वो नाउन की तरह फंक्शन करेगा. अब इसका मतलब क्या है? देखो नाउन फ्रेज में होता क्या क्या है. नाउन फ्रेज में एक तो नाउन होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे, और सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है जी मॉडिफायर. नाउ व्हाट इज अ मॉडिफायर? अ मॉडिफायर कैन आइदर बी अ प्री मॉडिफायर और अ पोस्ट मॉडिफायर. देखें जी, नाउन फ्रेज में आपके पास एक तो नाउन होता है और दूसरा मॉडिफायर होता है. अब मॉडिफायर क्या करेगा? विच मॉडिफाइज योर नाउन. सो अब जब नाउन के साथ एक सिंगल वर्ड भी आपके साथ उसके साथ आप ऐड कर दोगे, इट मीन्स कि अब वो सिंगल वर्ड तो रहा नहीं है, तो वो फ्रेज बन जाएगा. सो वो नाउन फ्रेज होगा. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लाफिंग. अब आप देखो, बॉय इज अ नाउन, बॉय इज नाउन, द इज डिटर्मिनर, मतलब it is a modifier, and with brown hair is also a modifier. Now the is a pre-modifier, है ना? Pre मतलब noun से पहले वाला और post noun के बाद वाला. So with brown hair is a post modifier, and this whole bunch of words is a noun phrase,
right? So what is the best way, what are the ways to make a noun phrase? In a noun phrase you can see a noun pre-modifier with a noun, or a noun with a post modifier, or pre-modifier plus noun plus a post modifier. और इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दी. Pre modifier, the noun is boy with brown hair is post modifier. So this is a noun phrase. The boy with brown hair is laughing. अगर हम full sentence को पढ़ें, the boy with brown hair is laughing, the boy with brown hair subject हो गया, right? Is आपका linking verb हो गया, और laughing जो है, sorry, is not a linking verb, is a helping verb, and laughing is the present participle. So is laughing से तो आपको ये is a finite verb, so is से आपको ये पता चल गया, और subject और finite verb दोनों मौजूद हैं. It is a clause. लेकिन अगर हम just the boy with brown hair की बात करेंगे, it is an example of a phrase. And which phrase? A noun phrase. Why? It has a noun with pre-modifier as well as a post-modifier. Let's talk about another sentence. He is wearing a nice white shirt. Now, a nice white shirt. Shirt to ho gaya noun. Now, a nice white. These all are the modifiers and they are pre-modifiers. Right? जी जनाब, pre-modifiers in a noun phrase. Beta, first we will talk about the formation of a noun phrase, and then we will definitely talk about the function of a noun phrase. In a noun phrase you can notice a pre-modifier or a post-modifier. Now what is a pre-modifier? A pre-modifier can be a determiner, it can be a number or an adjective. If you talk about a determiner can be an article, it can be a quantifier, it can be a demonstrative adjective, it can be a possessive adjective or an interrogative adjective also. What exactly is the definition of a determiner? A determiner is a word that modifies or describes, or I can say introduces a noun, and determiners can be used to clarify what a noun refers to. Okay. For example, if I say a book, it means that I'm talking about an ordinary book, or when I say the book. So this is the power of the determiners, right? Okay ji. Quantifiers. Quantifiers signifies the quantity, so quantifiers are also determiners, and or determiners are always pre-modifiers. So many, some, a lot of, these are etc. These are the examples of quantifiers. Let's see an example. Some students in the class are still not serious. Now what is some? It is a pre-modifier. Yes, it is clear, it is evident, क्योंकि student noun यहाँ पे और noun से पहले है, pre-modifier है और ये determiner है. सही हो गया. और ये quantifier है. Demonstrative adjectives. Demonstrative this, that, these, those, these book, this house, and these people are not to blame. अच्छा जी, I don't, अच्छा जी यहाँ पे want miss हुआ हुआ है. I don't want to sit near this window. So this is a demonstrative adjective. These people may, these is a demonstrative adjective. So this, these are the demonstrative adjective. Demonstrative adjectives means के determiners हैं, which makes them pre-modifier. अच्छा जी, एक example ले लेते हैं. If I say this book is mine. सही है. अब आप देखें, this is what? A demonstrative adjective, क्योंकि इसके बाद noun आ गया. So this is also a determiner. लेकिन अगर मैं इसी sentence को यूं लिख देता हूं, this is my book. Although the meaning is same, but over here, this, although this is a demonstrative word, but this word is no more an adjective. Now this demonstrative word is a demonstrative pronoun, and my book. So my is not a pronoun. It shows possession. It is a possessive adjective, right? So a determiner can also be a possessive adjective. My book, right? His pencil, their friendship, etc. So let's see what is the sentence. Jennifer brought her cat. ठीक है जी, her cat. So cat is a noun, so her is what? A determiner.
Okay जी, a pre-modifier can also be a number, numeral adjective or number, and it can be a number, can be a cardinal number like 1, 2, 3, etc. And whenever we are talking about ordinals, ordinals means first, second, थर्ड, फोर्थ एंड द लिस्ट गोज ऑन। सही है जी। अगर मैं कार्डिनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 एटसेट्रा इनकी बात हो रही है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स या ऑर्डिनल नंबर्स की बात हो रही है तो फर्स्ट, सेकंड, 12th, 100th, 4th, ये इस तरह के जो नंबर्स हैं वो ऑर्डिनल होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स? ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ पीपल और थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई एम क्लोज विद माय 4 siblings, so 4 is a cardinal number. Siblings is a noun, so 4 is a pre-modifier and it is a cardinal number. Ordinal numbers, to specify the order of nouns in a series. This is the function of ordinal numbers. For example, example number 1, I think the fourth man in this line is a thief. So man is a noun, so fourth is a pre-modifier. It is a pre-modifier, and this pre-modifier is an example of an ordinal number. So fourth man is a phrase for sure. Another example, enjoy your 12th birthday. So 12th is what? A pre-modifier. Birthday is a noun. So 12th birthday is a phrase for sure, where 12th is an example of an ordinal number which makes it a pre-modifier. Adjectives तो बहुत easy होता है. A pre-modifier can be an adjective also, like a beautiful car, intelligent student, etc. etc. जी जनाब, अब आपने मेरी हेल्प करनी है फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रेजेस यूजिंग प्री मॉडिफायर्स। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे नाउन फ्रेजेस तो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, जितने भी ब्लैक में हाईलाइटेड हैं वो नाउन फ्रेजेस हैं, और नाउन फ्रेजेस में नाउन से पहले जो है वो प्री मॉडिफायर्स ही हैं फॉर श्योर। आपने मुझे हेल्प करनी है कि इसमें प्री मॉडिफायर्स कहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट। अच्छा जी, जैकेट तो हो गया नाउन। अच्छा जी, A, what is A? A is a determiner because it is an article, and black, it is an adjective, right? Another noun phrase, an apple a day keeps doctor away. Apple is a noun, an is an article which makes it a determiner. So an is a pre-modifier. Why? Because the an is a determiner. This is my house. Acha ji, my. What is my? My is not a pronoun first of all. It is a possessive adjective because it is telling you more information about houses. It is a possessive adjective, so it is a possessive adjective. Possessive adjective is a determiner. It can be a determiner, and determiners are always the pre-modifiers. ठीक है जी, so this is my house. House is a noun, so my house is a noun phrase where my is a determiner. Those people are so friendly. Acha ji, what is now those people is a phrase, noun phrase. People is a noun. Those is a demonstrative adjective and a pre-modifier. There was a lot of rain last week. Acha ji, rain is a noun. A lot of, acha, a lot of rain is a noun phrase for sure. Rain is a noun. A lot of is what? The quantifier, right? It is a quantifier. So quantifier is a determiner. So a lot of is a pre-modifier, and rain is a noun. Now, the last sentence is example of a compound sentence. I have several friends, but he is my best friend. Again, several friends is a noun phrase. My best friend is again a noun phrase. Friends is a noun, and several is what? A pre-modifier, है ना? अच्छा जी, उसके बाद देखें। अच्छा जी, several आपका जो है again determiner है. Why it is a determiner? जी, क्वांटिफायर है जी, सही है। अच्छा, उसके बाद माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जी, एक पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया और एक एडजेक्टिव हो गया। सो ये दोनों जो हैं प्री मॉडिफायर्स हैं, और फ्रेंड आपका नाउन है। सो हमें ये पता चल गया कि जो नाउन है उसमें प्री मॉडिफायर्स भी आएंगे। नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर्स का रोल होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है नाउन फ्रेज को। सो अगर आपको प्री मॉडिफायर्स और अच्छा जी, now let's talk about some errors. You are required to spot the errors. My this house is beautiful. अच्छा जी, what's your opinion? ये sentence ठीक है या गलत है?
आप देखो my and this both are determiners, so याद रखिएगा हम दो determiners को इकट्ठा यूज नहीं कर सकते. My this house, my is a determiner, this is also a determiner. Why? My possessive adjective हो गया और this क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. तो ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं ना हाउस के बारे में. सो ये तो गलत हो गया, टोटली गलत हो गया. आप क्या करोगे, या तो आप लिख दो इसको माई हाउस इज ब्यूटिफुल, या आप लिख दो दिस हाउस इज ब्यूटिफुल. लेकिन आप माई दिस हाउस इज ब्यूटिफुल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ब्यूटिफुल हाउस. It seems correct, but it is not. Now, where is the mistake? देखें जी, house is a noun, ये तो समझ आ गई. Beautiful is an adjective, so beautiful house is a noun phrase, वो तो समझ आ गई. But mistake क्या है? Mistake इसमें ये है जनाब कि जब भी हम, ये बहुत important point है, singular countable noun की बात करते हैं. ठीक है जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उससे पहले फिर आपको आर्टिकल लगाना जरूरी होता है. आई हैव ए ब्यूटिफुल हाउस. अब ये सेंटेंस ठीक है, राइट. टेक अनदर एग्जांपल, ही हैड ऑसम कार. अब आप देखो कार इज अ काउंटेबल नाउन एंड इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. इफ इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो इसका मतलब है फिर मुझे यहाँ पे आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा. ही हैड एन ऑसम कार. अच्छा जी, what if we are dealing with a plural countable noun? अगर आपने plural countable noun के साथ आप डील कर रहे हो तो उसमें it is optional, आप definite indefinite article लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते. It is also dependent upon the situation. Next sentence, 5 these intelligent students are my classmates. अब इसमें क्या difference है? अब देखें 5 these intelligent, 5 क्या है जी? 5 तो हो गया number, these क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और इंटेलिजेंट जो है इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अच्छा जी, सो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमारा एक लाइफ सेवियर है जी डीएनए फॉर्मूला, वेयर डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनर, एन स्टैंड्स फॉर नंबर एंड ए स्टैंड्स फॉर यस एडजेक्टिव्स, राइट. सो अब आपने इसको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, आप इसको फॉलो करो, डीएनए को फॉलो करो. डी यानी कि दीज पहले आ जाएगा, फिर नाउन फिर नंबर आ जाएगा 5, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट आ जाएगा, राइट. और उसके बाद बाकी सेंटेंस, स्टूडेंट्स आर माय क्लासमेट्स. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ जी कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो है वो अभी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है. ये एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है, वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे. ओके जी, फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रेजेस, पोस्ट मॉडिफायर्स. अब नाउन फ्रेज जो है उसके बाद भी कुछ मॉडिफायर्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी गर्ल फ्रॉम द टाउन. अब गर्ल फ्रॉम द टाउन में अगर आप गौर करो तो फ्रॉम द टाउन, अब गर्ल तो नाउन हो गया, ठीक है जी, गर्ल तो नाउन हो गया. फ्रॉम द टाउन, अगर मैं जस्ट फ्रॉम द टाउन की बात करता हूं तो इट इज व्हाट, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब प्रीपोजिशनल फ्रेज हम देखेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है इंशाल्लाह सून. सो अगर मैं जस्ट फ्रॉम द टाउन की बात करूंगा इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन अगर मैं नाउन भी साथ ऐड कर लूंगा सो इट इज अ नाउन फ्रेज. सो फ्रॉम द टाउन इज अ पोस्ट मॉडिफायर. अ प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन बी अ post modifier, right? A post modifier can be a prepositional phrase, it can be a gerund phrase, it can also be an infinitive phrase. So we will see. अच्छा, the boy with brown hair, अगर मैं with brown hair की बात करूं, with brown hair, again it is an example of a prepositional phrase. अच्छा, अगर मैं जस्ट द बॉय की बात करूं, अगेन इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, नाउन सिर्फ बॉय है, द डिटर्मिनर है, सो द बॉय इटसेल्फ इज अ नाउन फ्रेज. और अगर मैं विद ब्राउन हेयर को भी ऐड कर दूं और मैं फुल ग्रुप ऑफ वर्ड द बॉय विद ब्राउन हेयर की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा. क्यों? नाउन फ्रेज द बॉय के साथ जो है हमने पोस्ट मॉडिफायर विद ब्राउन हेयर को भी ऐड कर दिया. अगर जस्ट विद ब्राउन हेयर की बात करेंगे तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा. ओके जी, अनदर एग्जांपल, द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू. अच्छा जी, अब आप देखो द लेडी ये तो अगर सिर्फ इसकी बात करो तो ये नाउन फ्रेज है, समझ आ रही है. अगर मैं जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू यू की बात करता हूं तो इट इज अ जेरंड फ्रेज.
राइट लेकिन अगर मैं द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू की बात करूंगा तो मैं कहूंगा नाउन फ्रेज is attached with a post modifier which is a gerund phrase. So the lady next sitting next to you is a noun phrase. अब आप इसको सेंटेंस में तो बहुत इजीली यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई aunt. राइट पूरा सेंटेंस बन गया. द बॉय विद ब्राउन हेयर इज माई ब्रदर या इज माई फ्रेंड. गर्ल फ्रॉम द टाउन आप कर दो आई मेट अ गर्ल फ्रॉम द टाउन. तो भाई ये आप इसको फुल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो. इसको मैं अब बिल्कुल इनकैप्सुलेट करके बताता हूँ जी कि अगर आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज या जेरेंट फ्रेज या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है आपका हो सकता है पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस. देखें जी नाउन फ्रेज की पोजीशन वही होती है जो नाउन की पोजीशन होती है एक सेंटेंस में. अ नाउन कैन बी पोजीशनड एज ए सब्जेक्ट. A noun can be a direct object in a sentence. A noun or a pronoun can be मतलब normally a pronoun can be an indirect object, person can be an indirect object, and a noun can also be a complement. सही है. सो जो नाउन की प्लेसमेंट होती है वही नाउन फ्रेज की भी प्लेसमेंट होगी. नाउन फ्रेज या तो डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इंशाल्लाह ये भी हम जल्दी कवर करेंगे. अभी माइंड में ये रख लो कि जो आपका एक्शन वर्ड होता है एक्शन वर्ड से आप व्हाट और whom का आंसर पूछो और व्हाट और whom का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. मैं भी इसको क्लैरिफाई भी करूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी. अच्छा जी. देखें जी द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लॉफिंग. द बॉय विद ब्राउन हेयर इज अ नाउन फ्रेज. वाई? बॉय इज सब्जेक्ट. The is a pre-modifier. With brown hair is a prepositional phrase. But क्योंकि boy with brown hair पूरे को मैंने highlight किया हुआ है so the boy with brown hair would be a post modifier. The is a pre-modifier and the boy with brown hair is complete. Is this complete group of words is a subject that is a noun phrase. ठीक है. So a noun phrase can be a subject of a sentence. He is wearing a nice white shirt. अच्छा जी shirt noun है. A नाइस वाइट ये आपके प्री डिटर्मिनर्स हो गए प्री मॉडिफायर्स हो गए. अच्छा अब आप देखो कि ही इज वेयरिंग अ नाइस वाइट शर्ट. ये है क्या? मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा. यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क अ क्वेश्चन व्हाट फ्रॉम दिस वर्ब. सो ही इज वेयरिंग व्हाट. The answer of what is always a direct object, right? So he's wearing what? He's wearing what? A nice white shirt. So a nice white shirt is what? A direct object, right? So noun phrase can also be a direct object in a sentence. Acha ji, she was the devil in disguise. Now she is the doer of an action. Was is not a helping verb. It is a linking verb over here. And the devil in disguise is what? It is complementing. It is telling you it is the complement of the subject. Linking verb की best way इसको recognize करने की क्या होती है. आप linking verb को is equal से मतलब in your mind replace कर सकते हो. She is equal to devil in disguise. Yes. So devil in disguise is the subject complement. So a noun phrase can be a subject. It can be an object. It can be a direct or an indirect object. It can also be the complement of subject. Okay ji, now let's talk about some examples. The quick brown fox jumped over the lazy dog. अच्छा जी अगर मैं बात करता हूँ जी द क्विक ब्राउन फॉक्स. आप ये देखो कि इसमें फॉक्स तो हमारा नाउन हो गया. द क्विक ब्राउन ये हमारे क्या हो गए? प्री डिटर्मिनर्स हो गए. इट मीन्स दैट फॉक्स इज द सब्जेक्ट और द क्विक ब्राउन भी क्योंकि फॉक्स के साथ अटैच्ड है सो ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट यानी कि ये नाउन फ्रेज हो गया. अच्छा जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग. द लेजी डॉग. अब देखो जम्प्ड ओवर व्हाट तो नहीं पूछ सकता लेकिन जम्प्ड ओवर whom पूछ सकता हूं. जम्प्ड ओवर whom? द लेजी डॉग. सो द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom is always what? A direct object. So the lazy dog is again a noun phrase. Why? Because it is a direct object. Next example, the young puppy is adored by everyone. Now, puppy is the subject, the young are the modifiers. So, the young puppy whole group of words is a subject which makes it a noun phrase. Next sentence, I don't have a bank account. अच्छा please इसमें ये देखिएगा have is not a helping verb over here. Have is a man verb over here. Have can also be a man. Have can act like a man verb also. I don't have a bank account. I don't have what? Have से what
पूछो what, सही है, I don't have what, a bank account. So a bank account is an answer of what? So it is a direct object. So if it is a direct object, it is actually a noun phrase. Why? A noun phrase can also be a direct object. Now another sentence. This man has a nice smile, but he has got iron teeth. अच्छा जी, this man, ये एक noun phrase हो गया. Has, again, it is not a helping verb. It is not a helping verb. Please bear this thing in mind. A nice smile. अच्छा जी, has what? This man has what? A nice smile. So a nice smile is a direct object of the verb has, right? अच्छा, but he has got. अब यहाँ पे जो has आ रहा है, मैंने contraction में यूज किया हुआ ना, he has लिखा हुआ है. अब यहाँ पे जो has है वो क्या है? Helping verb है. It is a helping verb. अच्छा, but he has got iron teeth. अच्छा जी, got से what पूछो? Got what? Iron teeth. So iron teeth is again a direct object, and it is the direct object of the verb got. So a nice, this man is a subject. That is the reason why it is a noun phrase. A nice smile is the answer of, is the direct object of the verb has. That is the reason why it is a noun phrase. Acha, he has got iron teeth. Iron teeth is the direct object of got. That is the reason why it is a noun phrase. ओके जी, वेरी फ्यू एशियन टाइगर्स रिमेन इन द वाइल्ड. ये तो बहुत ही इजी हो गया. देखें जी, टाइगर्स आपका सब्जेक्ट है. सो वेरी फ्यू एशियन जो हैं ये आपके प्री मॉडिफायर्स हैं. सो वेरी फ्यू एशियन टाइगर्स, ये पूरा की पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया. दैट इज अ नाउन फ्रेज. Aunt Jennifer cooked a meal for 6 people. अच्छा जी, Aunt Jennifer cooked what? Cooked what? A meal for 6 people. So a meal for 6 people is a direct object, and as it is not a single word, it is a group of words, so it is a noun phrase. अच्छा जी, Aunt Jennifer gave her hungry and crying child a meal. मैंने आपको बताया था कि जो आपका नाउन फ्रेज है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. सो अभी एक एग्जांपल आ गई. देखो, Aunt Jennifer gave what? Gave what? Her hungry and crying child? No. What का आंसर है a meal, right? So a meal is a direct object. Now you are required to ask a question. Direct object से आप पूछो to whom or for whom, right? And the answer of to whom or for whom is always an indirect object. Let me justify it. Aunt Jennifer gave what? A meal. To whom? Her hungry and crying child. So her is an indirect object, and hungry and crying child is attached with her. So hungry, her hungry and crying child is actually a noun phrase, right? Okay ji. Another sentence. A sailor's best friend is a wide open sea. Acha ji, a sailor's best friend. Now is a linking verb. That is the reason why a wide open sea is the subject complement. A sailor's best friend is a subject, right? It is, again, it is a noun phrase also, and a wide open sea is also a noun phrase, right?